TC712. Go ahead. We observe both telemetry carriers are on. Copied. নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েদার নাটসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ 2রা সেপ্টেম্বর আদিত্য-L1 লঞ্চ হচ্ছে এবং শ্রীহরিকোটা থেকে সরাসরি আপনাদের কাছে চলে এসেছি লাইভ নিয়ে। আদিত্য-L1 হলো সূর্যের এক মিশন, অর্থাৎ সৌর পর্যবেক্ষণের একটা মিশন। সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করবেন। All stations stand by for the time mark. T-minus 30 minutes and counting. ওয়েলকাম Sriharikota Satish Dhawan Space Center, Indian Research Organization। PSLV-C5 অর্থাৎ আদিত্য-L1 মিশন আজ লঞ্চ হতে চলেছে শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে। चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सफल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत। हमारे साथ आज के इस मिशन में जिसका नाम है PSLV-C57 आदित्य-L1 मिशन। চন্দ্রযান 3 সফলের পর আজ আদিত্য-L1 এর লঞ্চ হতে চলেছে শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে। PSLV-C57 রকেটে করে পাড়ি দেবে সূর্যের উদ্দেশ্যে এবং আদিত্য-L1 একটা হ্যালো অরবিটে ঘুরবে। হ্যালো অরবিটটা কি, সেটা হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট, অর্থাৎ
এমন একটা লাগেজ পয়েন্ট যেখানে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একদম সমান, অর্থাৎ পৃথিবীও টানছে, সূর্য যে টানছে সেই জায়গায় গিয়ে কিন্তু একটা পয়েন্ট হচ্ছে, সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় হ্যালো অরবিট। সেই অরবিটেই কিন্তু যাবে আমাদের আদিত্য-L1 এবং South polar regions on the moon. সাউথ I'm পোলে sure many কিন্তু of you were the সাকসেসফুলভাবে eager and কিন্তু proud আমরা spectators ইতিহাস of গড়তেই the পেরেছি, Chandrayaan-3 landing that was being সেই telecast বিষয়ে from সবাই জানে। IST-এ, situated in Bangalore. We bring to you an integration film for the PSLV-C57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल नोटिस लगे हुए हैं सिस्टम के लिए। আজ আদিত্য-L1 পাড়ি দেবে সূর্যের উদ্দেশ্যে। সূর্যের একদম কাছে যাবে তাও না, द्वितीय चरण পৃথিবী থেকে মাত্র 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে যাবে আমাদের আদিত্য-L1 এবং PSLV-C57 রকেটে করে পাড়ি দেবে সূর্যের উদ্দেশ্যে। আজ তার লঞ্চ ডেট এবং আমরা সরাসরি চলে এসেছি শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে লাইভে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদিত্য-L1-এর যে রকেট, সেই রকেট কিরমভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে। এবং এই রকেট কিন্তু এই যে 57 বার যে হয়েছে তার মধ্যে মাত্র 2 বার ফেলিয়ার, তাও সেটা অনেক আগে, এখনকার কিন্তু সেটা না। মোটামুটি ওই 10-12 মানে PSLV-10, 11 এইরকম টাইমে কিন্তু দুটো ফেলিয়ার হয়েছিল, তার আগে আর পর ফেলিয়ার হয়নি। অর্থাৎ কতটাই আত্মবিশ্বাস এই রকেট আপনারা বুঝতেই পারছেন। চাঁদে সফল অবতরণের পর ভারতীয়রা এবার মহাকাশে সূর্যের দিকে পাড়ি দিতে চলেছে। এবার পাখির চোখ হলো আমাদের সূর্য, যার জন্য আজ 2রা সেপ্টেম্বর চাঁদের পর আজ আদিত্য-L1 মিশন লঞ্চ হতে চলেছে। সূর্যের অধ্যয়নের জন্য ভারতের এটা হচ্ছে প্রথম মিশন, অর্থাৎ সৌর মিশন এর আগে কিন্তু ভারত করেনি, এই প্রথম কিন্তু সৌর মিশন করতে চলেছে।
You can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर। Reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya-L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SUIT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. তো এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিরকমভাবে আদিত্য-L1 তার গবেষণা চালাবে সূর্যের কাছে গিয়ে। আমরা মাত্র 10 ভাগের 1 ভাগ কাছে যাব সূর্যের, অর্থাৎ L1 পয়েন্ট অর্থাৎ লাগেজ পয়েন্ট। The solar low energy X-ray spectrometer, SOLEXIS, and the high energy. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV-C57 Aditya-L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stage. আর মাত্র 17 মিনিট বাকি ওড়ার জন্য, আর 17 মিনিট পরেই সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে আমাদের আদিত্য-L1। The onboard batteries have been charged. এবং PSLV রকেট আমাদের সোলার সিস্টেমে লঞ্চ করবে এবং আস্তে আস্তে তাকে সুইং শট মাধ্যমে তাকে ঠেলে দেওয়া হবে সূর্যের দিকে। এবং সে নিয়েই কিন্তু এবং আস্তে আস্তে তারপর এটা পৌঁছে যাবে সূর্যের কাছে L1 পয়েন্টে। L1 পয়েন্ট হচ্ছে লাগেজ পয়েন্ট। লাগেজ পয়েন্ট হলো যে জায়গায় কোনো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত কাজ করে না, অর্থাৎ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ যে শক্তি এবং পৃথিবীর যে শক্তি, সেই শক্তির সমান থাকে, সেই জায়গায় কিন্তু যাবে আমাদের আদিত্য-L1 এবং সেখান থেকেই কিন্তু তাকে হ্যালো অরবিটে প্রবেশ করিয়ে গবেষণা চালানো হবে করোনাগ্রাফি, সৌরজগৎ সম্পর্কে নানান বিষয়। তো সেই বিষয়ে অবশ্যই আমরা আরও পরে আপডেট দেব। তো চলুন দেখতে থাকুন। For the launch of PSLV-C57 Aditya-L1
SDS servers activated. MC अभी confirmed आपने data देखा from SHAR-1 इस and मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री SRB जो ने इस मिशन का hereby authorizes us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है PS2 control system redundant chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system actuation in progress. आदित्य-L1 जो कि एक अंतरिक्षयान है इस मिशन का इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी एसेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे तल के साथ मापा जाता है आज के एक रॉकेट के शुद्ध आदित्य-L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्षयान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी रॉकेटेर फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा 125 দিন পর কিন্তু L1 পয়েন্টে যাবে অর্থাৎ লাগেজ পয়েন্টে যাবে লাগেজ পয়েন্টে গিয়ে তারপর সে তার পর্যবেক্ষণ চালাবে অর্থাৎ 125 দিন লাগবে সূর্যের কাছাকাছি Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. Aditya-L1 সূর্যের উপর নামবে না যেমন চন্দ্রযান মিশনে আমরা সূর্যের উপর S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively.
The core S139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 is separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates, and the last in the fourth stage of the rocket, together with the Aditya-L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya-L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya-L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya-L1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है, सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायुगति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े এই মুহূর্তে কিন্তু সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের গ্যালারিতে सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। লোক ভর্তি হয়ে গেছে এবং সবাই 4 মিনিট की লঞ্চ दूरी पर हैं দেখার उड़ान জন্য से। উৎসুক আছে, T-4 minutes and সেটা counting. আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य-L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा। আর মাত্র 3 মিনিটের অপেক্ষা, তারপরে কিন্তু সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে আমাদের PSLV-C57 এবং আদিত্য-L1 মিশন। यह PSLV-C57 का प्रमोशन यान पृथ्वी ट्रैकिंग থেকে के संदर्भ में भी 1.5 काफी মিলিয়ন जटिल है। কিলোমিটার इसे ट्रैक करने के দূরে लिए शॉर्ट গিয়ে पोर्ट ब्लेयर লাগেজ ब्रूने और পয়েন্টে बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें হ্যালো वास्तविक समय অরবিটে पे यान की প্রবেশ जानकारी করিয়ে उपलब्ध कराते रहेंगे। আদিত্য-L1 কে लेकिन चतुर्थ चरण के तार प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की গবেষণার কাজ दृष्टि से শুরু दूर जा করানো चुका হবে। होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग 125 या দিন शिपबोर्न পর टर्मिनल কিন্তু को পৌঁছাবে दक्षिणी पैसिफिक महासागर আদিত্য-L1 में स्थित किया गया है। লাগেজ वो পয়েন্ট हमें 1 এর PS4 কাছে। बर्न 1 और बर्न 2 তারপর की হ্যালো অরবিটে जानकारी उपलब्ध গিয়ে कराएगा। সেখানে इसके তার बाद PS4 গবেষণা शट চালাবে। ऑफ और आदित्य-L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. আর মাত্র 2 মিনিটের অপেক্ষা। अब हम उड़ान से 1 मिनट काउंटडाउन 50 सेकंड शुरू। की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark 2 का 1 और PSLV के 2 सफल আদিত্য-L1 प्रमोशन हो चुके অভিযানের हैं। यह PSLV L1 वर्तमान পয়েন্ট वर्ष में পৌঁছাতে तीसरा मिशन है। আদিত্য-L1 এর সময় লাগবে 4 মাস। আদিত্য-L1 অভিযানের All stations. পোলার স্যাটেলাইট Stand by লঞ্চ for the ভেহিকেল timer. অর্থাৎ T-1 minute and counting. PSLV-C57 Minus 55 seconds. All stops around. যার ওজন হচ্ছে 1475 কেজি All sequences এই are মহাকাশযান বহন করবে। तो हमारे এই साथ बने रहिए। মহাকাশযানটিকে পৃথিবীর अब চারপাশের 40 সেকেন্ড উপবৃত্তাকার पर কক্ষপথে -40 নিয়ে সেকেন্ড। যাওয়া হবে प्रमोशन किया এবং जाएगा। HPP open. মহাকাশটি Minus 35 seconds. মহাকাশযানটি Minus 30 seconds. পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে কিন্তু পৌঁছে যাবে Minus 25 seconds. PS2 VSP L1 open. পয়েন্টে। তো কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণের Minus 20 মধ্যেই seconds. কিন্তু PS1 ignition RMS on. লঞ্চ হবে Minus 15 আমাদের seconds. আদিত্য-L1। তো 10, সময় 9, এখন 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. তো লঞ্চ হয়ে গেল আদিত্য L1 রকেট Plus 5 seconds. অর্থাৎ PSLV-C57 Magnificent liftoff of PSLV-C57 with Aditya-L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। আকাশের উদ্দেশ্যে এবং সে इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C57 কি অসাধারণ দৃশ্য লাগছে। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, আমরা the thrill রকেটের are সাউন্ড just এবং তার amazing. একটা আওয়াজ কিন্তু Groundlet and শুনতে airlit পাচ্ছি। strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lead strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है প্রথম ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है। প্রথম স্টেজ কিন্তু সেপারেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। क्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित তৃতীয় चरण চরণ है, इसका কিন্তু प्रज्वलन আবার शुरू हो चुका পৃথক है করা হলো और वर्तमान में আমরা प्रणोदक দেখতে बन পারলাম रहा है। Performance normal. এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু রকেট নরমালি আছে। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed এবং loop এই guidance মুহূর্তে has কিন্তু been initiated. 77 কিলোমিটার উপরে According to আছে। the announcement by Range Operations Director, PSLV PS2 is developing nominal রকেট thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर এখনো পর্যন্ত কিন্তু সবকিছুই নরমালি আছে আদিত্য L1 এ। प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. পেলোড সেপারেশন হলো আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পেলাম। The payload fairing covering the Aditya-L1 spacecraft has been এবং separated. তার সাথে সাথে আদিত্য Current L1 altitude of the launch vehicle is আমরা 118 লক্ষ্য করতে kilometers. পারছি তার সামনের দিকে আছে এবং এই Relative মুহূর্তে velocity exceeding গতিবেগ 3.8 kilometers per second. 3.8 किलोमीटर जी हाँ, प्रति यान अब सेकंड। घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third stage काल समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे का তৃতীয় प्रज्वलन চরণ शुरू हो অর্থাৎ चुका है। 3 নম্বর পদক্ষেপ কিন্তু আবার পৃথক করা হলো We are close to এবং এই 5 মুহূর্তে minutes past the launch time. Presently,
The third তার stage of গতিবেগ PSLV is হচ্ছে operational, developing nominal thrust. 5.26 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে Plus 5 minutes. এবং এই মুহূর্তে तृतीय चरण में 133 কিলোমিটার উপরে 7.6 टन আছে के ठोस नोजल আমাদের का प्रयोग আদিত্য होता है L1 और इसका स्पेस प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन এই करता মহাকাশ हुआ যানটি एक और কিন্তু मिशन 7টি PSLV-C57 का পেলোড বহন করে নিয়ে যাবে। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. এই মুহূর্তে গতিবেগ হচ্ছে 7.34 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে to এবং this এই mission, মুহূর্তে 150 কিলোমিটার উপরে The অবস্থিত PS4 আদিত্য L1। will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित Plus किए 8 जा minutes. रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. এই মুহূর্তে কিন্তু চন্দ্রযান মাপ করবেন, এই মুহূর্তে কিন্তু আদিত্য L1 7.34 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে কিন্তু Speaking a few words about the Aditya-L1, describing the sun, Indian Vedas have छूटছে। said, Yesha Bhagavan Manirakash-mandalasya Chakravati Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayaiva Charkarti Bharvati Jarhati Cha Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. 600 স্টেজও কিন্তু Now সেপারেশন we have a করা হলো। successful
separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting, it is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. PS3 সেপারেশন হলো কিন্তু जहाँ तृतीय चरण को 587.5 सफलतापूर्वक प्रकट कर दिया गया है Normal. और अब এবং স্পেস ক্রাফট PS4 কিন্তু hosting এখনো phase पर নরমালি है। আছে। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो এই रहा মুহূর্তে है। यान পৃথিবী प्राप्त থেকে संवेग 202 से কিলোমিটার উপরে आगे আছে बढ़ता हुआ और আদিত্য-L1 निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ স্পেসক্রাফট जा रहा এবং है। যার গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 7 কিলোমিটারও We are বেশি। 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध देखते जेम्स देखते वेब किंतु टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज 11 पॉइंट মিনিট पर स्थापित অতিক্রমণ किया হয়ে গেল আদিত্য-L1 মিশনের। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a এবং forewarning about লাগেজ পয়েন্ট 1 disturbances যেখানটা in অবস্থিত near-earth সেই space পয়েন্টের environment দূরত্ব হচ্ছে which পৃথিবী will থেকে pose 15 লাখ danger কিলোমিটার to the এবং সেই communication পয়েন্টেই systems গিয়ে and কিন্তু spacecrafts. হ্যালো অরবিটে Various thermal and প্রদক্ষিণ magnetic করবে, অর্থাৎ phenomena যেখানটা on the করে sun কিন্তু are of extreme সূর্য nature, এবং which পৃথিবীর cannot be মাধ্যাকর্ষণ replicated শক্তির in সমান। labs. অর্থাৎ দুদিক The থেকে best যদি way কোনো is to বস্তুকে observe the টানি sun up কোনো কারণে close. সে একটা পয়েন্ট আসে, সেই পয়েন্টে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় সমান থাকে। সেই পয়েন্টকেই বলা হয় L1 পয়েন্ট, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এবং The distance 1.5 between মিলিয়ন the Earth কিলোমিটার and অর্থাৎ Sun is 15 লক্ষ approximately কিলোমিটার দূরে যাবে। 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the Lagrange's point in the 3-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya-L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya-L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें
एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य-L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य-L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya-L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer, or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer, or MAG, developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic ঝমঝমিয়ে এই sensors. মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল। তার সঙ্গে আদিত্য-L1 কিন্তু প্রায় লঞ্চে। जहाँ आदित्य-L1 उपग्रह में निर्धार के बारे में जानते हुए
इसमें এই सुदूर মুহূর্তে কিন্তু संवेदन 20 মিনিট निद्भार হয়ে हैं গেল और আদিত্য-L1 এর यथास्थिति লঞ্চ प्रेक्षण निद्भार लगे हुए এবং हैं। তাকে सुदूर তার संवेदन উদ্দেশ্যে निद्भार में পাঠানো হচ্ছে सूर्य का प्रेक्षण আমরা करने লক্ষ্য के করতে लिए পারছি। BELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। যে কোনো দুটি মহাকাশীয় বস্তুর মধ্যে কিন্তু L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है L1 जो कि থেকে हार्ड एक्सरे L5 वर्णक्रम मापी পাঁচটি है। লাগেজ इसकी পয়েন্ট अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के এই अध्ययन পয়েন্ট के বা लिए की বিন্দু गई है। সমূহ यथास्थिति निद्भार में সমান आदित्य স্থানগুলিকে सोलर विंड पार्टिकल মহাকাশে एक्सपेरिमेंट পার্কিং इसका স্পট उद्देश्य হিসেবে है ব্যবহার করা হয়। सोलर অর্থাৎ এই पवन স্থানে सौर কিন্তু पवन में কোনো भारी आयंस प्रोटॉन्स মহাকাশ और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। বস্তুর অর্থাৎ अगला है কোনো प्लाज्मा গ্রহেরই एनालाइजर অর্থাৎ पैकेज যেমন फॉर आदित्य সূর্য থেকে পৃথিবীর यह भी सौर মহাকর্ষ पवन টান কাজ করে না में অর্থাৎ उपस्थित দুজন कणों দিক থেকে में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। এইসব বিন্দুর অর্থাৎ পয়েন্টের एडवांस মতো ट्राइएक्सिल স্থানগুলো हाई মহাকাশীয় रेजोल्यूशन বস্তু डिजिटल मैग्नेटोमीटर মহাকাশীয় টান इसे অত্যন্ত কম त्रिअक्षीय থাকে। चुंबकीय এই क्षेत्र টানে की यथास्थिति मापन करने के लिए মহাকাশীয় बनाया गया है और ऐसे বস্তুর চারপাশে दो ঘোরা समुच्चय যায়, लगे हुए हैं অর্থাৎ इस उपग्रह में। লম্বালম্বি ভাবে ঘোরা যায়। এবং এই পয়েন্টে ঘোরার ফলে কিন্তু তেমন কিন্তু জ্বালানি ব্যয়ও করতে হয় না। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य-L1 के निद्भार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स এই लैबोरेटरी মুহূর্তে আদিত্য-L1 7.2 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে ছুটছে এবং পৃথিবী থেকে 327 কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থান করছে এবং যে পয়েন্ট থেকে ছাড়া হয়েছে তার থেকে कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya-L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hats. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya-L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharatwaj, Director of PRL, Dr. Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, আরো বড় বড় কিছু মিশন আসছে যার মধ্যে কিন্তু গগনযান মিশন উল্লেখযোগ্য। গগনযান মিশন
PI of একটা SUIT, বড় মিশন হতে চলেছে Dr. ইসরোর Dipankar জন্য, Banerjee, কারণ Director of এই IIST, মিশনের মাধ্যমেই Nainital, কিন্তু Dr. আমরা Satish পরীক্ষা করতে Tampi, পারবো যে PI of Papa, আমরা and সঠিকভাবে Dr. যাতে Vipin K. মহাকাশে Yadav, মানুষ PI পাঠাতে পারি, of চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারি এবং Magnetometer, joining us today for a যেকোনো 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya-L1 মহাকাশীয় launch. ব্যাপারে যাতে To মানুষ start পাঠানো with the যায়। principal scientist and এই PI of SOLEX, গগনযান মিশনে Dr. কিন্তু Shankar আমাদের এখন Subramaniam, why একটা is Aditya-L1 mission so important and what are the রোবট objectives পাঠানো of this হচ্ছে এবং mission? এই রোবটটা একজন মহিলা হিসাবে যাচ্ছেন এবং তার নাম হচ্ছে ম্যামোমিত্র। আমরা প্রায় সকলেই for জানি providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar অবশ্যই heliophysics গগনযান as well as মিশন astronomy আমাদের জন্য একটা thrives on গুরুত্বপূর্ণ data. মিশন হবে। More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wavebands which are very important for the Earth ionospheric connections like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology, as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we'll move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya-L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya-L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya-L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the earth. We have instruments which look at not only in the sun direction, but also in other directions, for example, perpendicular to ecliptic or in the earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot,
the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what's a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 through using this mission, and this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now, what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now, what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. Now what we planning to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. So it's overall this instrument, along with the others, of course, the other PI will also be explaining about it. So these holistically will give you a lot of information regarding not only the sun, but also the heliosphere. Thank you. That was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripathi. Dr. Durgesh Tripathi. You are the PI of the for the payload suit. How is that different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you going to investigate using this? Yeah, so good afternoon. My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch, and one of the payload is gone there. So essentially, JWST, which is James Webb Telescope, and the Hubble Telescope, they are going to look at the universe, different objects, galaxies, star formation, and other objects you see in the universe. Whereas when we talk about Aditya-L1, it is going to look at one particular object, which is our sun. And it's also kept on the other side of the Sun-Earth line at the L1 point, whereas the James Webb Telescope went on the other side of the Earth, which is at the L2 point. Now, the scientific difference, of course, they also observe in ultraviolet, but Aditya, as Professor Anil Bharadwaj and also Professor Anna Purnisubramanian alluded to, these are multi-wavelength satellite, and they will be observing all across the electromagnetic spectrum. In particular, suit is going to be looking at the ultraviolet radiation in 2000 to 4000 angstrom, if that matters to you, emits from the lower and the middle atmosphere of the sun. And what we want to look at that how in general the sun's atmosphere is coupled by looking at the observations at various height, and how actually this radiation is coming and getting absorbed in the Earth's atmosphere, and what kind of effect it can have in the chemistry of ozone and oxygen, for example, and also these explosions which are happening, how much radiation they are creating, and how much effect it might have. Thank you. Thank you very much, sir. And now we move on to Dr. Satish Thampi. You are connected with the payload PAPA. Already the plasma particles on the moon are analyzed. How do you analyze plasma particles in the sun? And what is the importance of solar winds, and how does it impact? Thank you. Thank you for giving opportunity to come into this show. As my colleagues, they mentioned actually about the sun. Today we have the auspicious day where actually we are going to our own star, that is the sun. Just I want to tell to the viewers that actually the sun, which is our hero basically in the solar system. If you look into the mass of the solar system, 99% of the mass of the solar system is occupied by sun. And also this sun is plasma. Now, when we are talking about the heliosphere, actually with this, all our planets are engulfed in that thing. You know, we have been studying in decades, maybe in centuries, we have been studying about the sun. But what we are lacking actually a comprehensive approach, because sun is giving its energy mainly in three forms. The first one is the radiation, actually my colleagues already talked about, which we can do remotely from our ground. But the plasma, basically we are talking about the solar wind, what we call the space plasma, as well as the magnetic field. This can be only studied by in situ. If we study all these radiation, particles and field, then only we will get a full comprehensive understanding of the sun. Now, we are getting the first space-based observatory from the Indian soil, and we are making this opportunity.
And of course, I am thankful to ISRO and all my colleagues and my teammates from VSSC and all my scientific colleagues here. This is the opportunity we got actually. We are trying to understand actually all the three things: radiation, particles, and field. Already they mentioned about the radiation. Now Dr. Bibin will be talking about field. Just I want to emphasize on the particles. That's why we named it as PAPA. PAPA means Plasma Analyzer Package for Aditya. This is developed by Space Physics Laboratory in support of Vikram Sarabhai Space Center. And now this instrument has two components. If you look at the solar wind, basically it comprises of 95% protons, then alpha particles roughly around 4 to 5%, then equal number of electrons also. So our PAPA is a comprehensive package measuring both ions and the electrons. Now these electrons, like already our colleagues they mentioned actually the major transition events like coronal mass ejection. That's a huge mass which is coming out of sun. Basically it's a plasma. Basically when we are talking about solar and basically nothing but it's the extension of the corona only. That's the atmosphere of it. Now these particles actually they only actually modulate the energy and momentum of the planetary atmospheres. See when then sun is quiet, like he is not aggressive, sun is what we are getting the ambient solar wind. So if you look into that thing actually, that one actually gives what we call it about the interactions, what we call the normal routine phenomenon which is happening on there. But when there is sun is angry, it gives like in a CME, CAR or these sort of events are happening, that is really going to affect our planets. That's what we call the space weather. Now our intention is to understand, first of all actually what these effects, basically the solar wind, in the ambient condition as well as during this transition event, how this solar wind behaves, and also how this coronal mass ejections which is passing through different planets, how actually, what are the different things, like what we call about the microphysics, macrophysics, and the mesophysics of that things, that we want to understand. So one thing is actually it's a physics objective to understand because we are getting an ideal point, Lagrangian point, which is in the sun-earth plane, and we will be seeing the events exactly there. Second thing is actually we can definitely monitor the parameters. Like what actually PAPA will measure the electrons and ions, we will be getting energy, direction, and angular information, mass information. So if we know these things related to electrons we don't want the mass, but for the ions we are getting the mass information. Okay. Coupling all this information actually what we can do is we can derive the plasma moments. That will be definitely going to the modeling part, actually dynamics part, and that will definitely going to tell about the effect of the space weather effects. Yes. So in due course actually, with the L1, in addition to other L5 missions, we will be able to tell. This is the importance of the plasma mission. Yes. That actually, as you mentioned actually earlier, with the lunar mission we achieved, we tried to understand that thing. Really it changed, this plasma studies changed the perspective of the moon. Now Aditya will give more detail. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for that, sir. And now we move on to Dr. Dipankar Banerjee. So you manage the beautiful solar observatory at Nainital. How do you think the studies of heliophysics will supplement Aditya-L1? Can you tell us something about the history of solar observatories in India? That's right. India has a long tradition of looking at the sun from the ground. In fact, from Kodaikanal Observatory, we have been observing the sun for more than 100 years. And also we have beautiful, solar observatory at Udaipur, in the lakeside, and at Nainital. We are looking at the sun. But there are limitations of looking at the sun from the ground because you can only see the lower atmosphere of the sun. So this was very, very important that we could go to the space, and this is a fantastic opportunity. Originally, more than 10 years back, we were only looking at a small satellite program, and then Professor U.R. Rao suddenly came up with this idea, why are we taking baby steps? We should think big. We should go to much longer distance. And then this opportunity came in, the Lagrangian 1 mission, the entire country, all the scientific institution got very much highly motivated. There are multiple payloads were then proposed. So eventually now we have a Lagrangian 1 observatory class mission. And as you heard from my colleagues that it is a multi-wavelength observatory. So that's very important to have the shorter wavelength coverage from the space. And in addition, the ground-based observations are also important. So a combination of the ground-based telescope and the space-based platform is very, very important. And since you asked about the question about the, how Aditya in the overall heliophysics research within the international scenario, we only have 3 spacecraft around Lagrangian 1 point primarily from NASA and ESA. So I think again, this is a fantastic achievement from India if you could reach L1
with the full observatory class mission, it will really open a new window altogether. So I think this is a great opportunity, and we are all looking forward. And as I mentioned, probably we'll request that, a better ground-based facility. We have already projected a National Large Solar Telescope project from the ground. I think this is now high time we have a very nice ground-based telescope also to complement the capabilities of Aditya-L1. Thank you very much, sir. Indeed, it's a very great opportunity. And now we move on to Dr. Vipin K. Yadav. So you're in charge of the magnetometer. What is the contribution of magnetometer to Aditya program? You see, the magnetic field measurements are very crucial in space, and especially at L1 point. What we are going to measure with magnetometer is the interplanetary magnetic field that is coming all the way from Sun and towards the Earth. So typically these values at L1 point are around 5 to 10 nanotesla. But these values increases whenever there is an extreme solar event, such as the coronal mass ejection or say solar magnetic storms. Now these events are crucial to monitor the near Earth space weather, because these can have an effect on the life on Earth. If you remember Quebec, there was an event when the power lines were snapped a few years ago. That was because of an extreme solar event. So to keep an eye on the surroundings of Earth, we need these measurements, and apart from that, for solar wind observations also, these measurements will be crucial. Thank you. Thank you very much, sir. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres, and how does Aditya-L1 contribute to all of this? Good afternoon, viewers. As my colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to the 27 arcs to 10 to the 32 arcs. Now the thing is, these solar flares, why it is important, as because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, there are two unique instruments built by URAO Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 keV to extremely high energy, around 200 keV. And we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity? So I think these two instruments, along with the other two instruments, VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions, as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much, sir. And now I'd like to go back to Dr. Anil Bharadwaj. So there are many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya-L1 different from these satellites? Well, that's a very good question, because first of all, let me again tell you that India will be the third, or ISRO will be the third space agency to have a mission at L1 point. And I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument, and multi-direction, and it measures particle, field, and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently. That makes Aditya-L1 absolutely unique, because we are going to measure remotely, in situ, and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the ASPECTS payload, which stands for Aditya Solar Wind Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know, because when the CMEs are happening or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming, and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-direction information which is available from the ASPECTS payload, because it consists of two sensors, SWIS and STEP, essentially giving you in two different energy bands, and therefore, we'll be able to quantify the CME, CIRs, and all the processes which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally we move on to the principal scientist, Dr. Sankar Subramaniam. So how does
how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like Astrostat and Aditya-L1? Yeah, so now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like a nanosat, CubeSat, as well as the small satellite capability. And that is something which especially a heliophysics community could utilize it, because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle, because it requires technologies to be developed for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions, and that will enhances the science capability of our country to the next level. And as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya-L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can currently do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as at the small scale instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Thank you very much, sir. That was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee. And it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community? This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students, it's the entire country is excited. And we got this opportunity to now travel towards Sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really, really going out, and we expect that the youngsters, that the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless, we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is very important for us also to reach out to schools and colleges, because the younger generation should be told about this kind of activities which is happening in the country. Chandrayaan 3 launch has galvanized the whole nation, and everybody is interested to know what all is happening in the science and technology within the country. And therefore, this mission, along with the Chandrayaan 3 mission, that is the Aditya-L1 mission and Chandrayaan 3 mission, is going to give us a lot of new information which is going to be very beneficial for the country. Thank you. Thank you very much. Thank you everybody for participating in this discussion. And now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi, and I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya-L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। इस दौरान
चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है। यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV-C57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। और फिर टर्मिनल acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिपबॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। यह वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। Welcome back to the live coverage of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. अब कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Fourth stage engine started for band 2. यहाँ अभी अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। তো 4 নম্বর পর্যায়ের কিন্তু প্রজ্বলন है PS4 का শুরু হয়ে গেল এবং ইঞ্জিন স্টার্ট হলো আমাদের আদিত্য-L1 এর এবং তার সাথে সাথে হাততালিতে ভরে গেল ইসরো কন্ট্রোল রুম। A very happy piece of news here. Normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा।
4-stage performance normal. 4 নম্বর স্টেজ Fourth কিন্তু stage আপাতত নরমালি performing চলছে। normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. আর সাথে সাথে কিন্তু ইঞ্জিনের यह ফাস্টার ব্লো অন चतुर्थ হয়ে चरण গেছে है এবং PSLV एक्सेल रॉकेट का। তাকে আবার इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक हैं। এবং इसमें আর 2 মাত্র इंजन लगे होते हैं, हर एक 12 মিনিটের মতো বাকি 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न প্রতিস্থাপন करता করা है। इस আমাদের तरह कुल অরবিটে। प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently, the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later, there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। এখনো পর্যন্ত কিন্তু তার থাস্টার অন আছে এবং আর 200 সেকেন্ড অর্থাৎ 200 সেকেন্ডের মতো চলবে এবং আস্তে আস্তে সেটা বন্ধ হয়ে असल যাবে। में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार की भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरू स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरू स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya-L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya-L1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated. After exit from SOI, the cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit around L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya-L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से।
आदित्य-L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 भार लगे हुए हैं, जिनकी मदद से आदित्य-L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसके गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। +1 hour. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य-L1 के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite, as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में क्रूज स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event next is the separation event of Aditya-L1 spacecraft. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर कुछ ही क्षणों में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यान से अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 का सफलतापूर्ण अंतःक्षेपण अभी बाकी है। For Aditya-L1, ISRO has developed advanced flight dynamic software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. But the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya-L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य-L1 কিন্তু সেফলি ভাবে সেপারেশন করা হলো এবং তাকে ছাড়া হলো আমাদের অরবিটে এবং সেই কনফার্মেশন দিল আমাদের ইসরোর বিজ্ঞানীরা। Aditya-L1 satellite into the desired intermediate orbit.
PSLV-C57 Aditya-L1 mission is accomplished. এবং PSLV C57 এ করে তাকে প্রতিস্থাপন করা হলো পৃথিবীর কক্ষপথে। इसके बाद वह अपने आगे की এবার सफर जारी रखेगा ইসরো L1 চেয়ারম্যান point के लिए। এস সোমনাথ তার বক্তব্য রাখবেন এবং তার আগে সবার সাথে সে হ্যান্ডশেক করে নিচ্ছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে সবাইকে এবং এরপরেই কিন্তু সে তার বক্তব্য রাখবে इस मिशन की सफलता के लिए। अब हम এবং आपको लिए সফলভাবে चलते কিন্তু हैं अध्यक्ष महोदय পৃথিবীর के অরবিটে প্রতিস্থাপন করলো আদিত্য-L1। Congratulations. The Aditya-L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya-L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya-L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. So with me, the mission executives are there. Mr. Biju, the mission director, and Nigar Shahji, the director of the satellite project. So let them join me. Our Honorable Minister of State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh. So I request him to speak a few words. Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya-L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, the Nijri NGRI, Nagpur, the IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal and Mother India pledges
with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team, and the entire countrymen. May I request the Project Director of Aditya-L1, Nigar Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya-L1, and I'm extremely happy that Aditya-L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya-L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be normal. And Aditya-L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans-L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun-Earth Lagrange point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the center directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember Professor U.R. Rao, who sowed the seed for this mission, and looking forward for a successful halo orbit insertion and further great science output from the Aditya-L1 mission. Thank you all. Sri Biju, the Mission Director and the Project Director of PSLV. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished injecting Aditya-L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. The challenging requirements given by satellite team was indeed very it was very challenging to meet the orbital requirements. We have gone for a new mission design strategy. We have gone through numerous simulations to validate this, and that is the proof that you are having now. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums, and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV, and all our family members. With this, our capability of PSLV has increased manifold to venture into new missions, to new and challenging missions. I take this opportunity to thank my project team led by our Sri M.J. Lal as well as Damodaran, Vehicle Director and Associate Vehicle Director, in leading the entire campaign. I wish our satellite team an excellent time ahead for completing all the operations and completing all scientific objectives they have envisaged. Thank you all. Thank you very much. Thank you everybody for spending your time watching this mission and also supporting us and congratulating us, and we joined the entire country. We are very proud of the fact that we could do this mission, Aditya-L1 mission, just following the Chandrayaan-3 activities, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And the good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later,
So I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you for next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you. তো এর সাথে সাথেই আমাদের আদিত্য-L1 মিশন কিন্তু কমপ্লিট হলো। তো ফিরে আসছি আবার কোনো নতুন এক মিশন নিয়ে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। চলো টাটা।